while negotiating, be very careful in your mind. Don't rush through. Take time to establish a real relationship with the other party. This is, something that is very, very important for us to think about. Sometimes we are desperate to get certain things done, and we negotiate without even thinking about the terms that were mentioned, what has to be done, who the person is, how his background is, whether we will be able to survive that negotiation, whether that negotiation will really be fruitful for us. We go into it, accept it. But then that turns out to be a bad deal. All of us face it, and we learn it through that. But that means next time when you are negotiating or going through a deal, you need to be very careful. You need to have a clear focus in your mind. Okay, these are the terms. I have to stick on to these terms and principles of mine. I'm only going to talk on these bases. I will talk to them and I will tell them I can negotiate only till here, not further than that. Only this is sufficient. So you need to be very clear with your mind. The focus should be there in your mind. Don't rush through it. Give time. Make a relationship with the other person. Meet up 2 to 3 times. Socialize. You will get to know. Try to find out more about the person and then negotiate on certain things, because that really leaves a impact on the work that you're doing later on. Because if you have to work for a particular thing, you need to negotiate on proper terms. Now, next we come to resolve conflicts. Now, all of us have conflicts, be it in our professional life, be it in our personal life, be it with our children, be it with our students, anyone for that matter. We all have difference of opinions. We all have, conflicts with each other. But we need to resolve them. If we want to have a long-term relationship, if we see a long-term process, long-term working together, we need to resolve the conflicts. See, the stage, we need to have a stage set, we need to describe the conflict. We need to seek agreement. We need to gain perspective. That means we need to sit across the table and talk to each other. Today, for example, me and my friend have lots of conflicts, okay? We haven't been talking from a long time. But if none of us make a move to come forward and sit across the table and talk to each other and listen to each other, then lifelong we will stay the same, Same thing even with 2 colleagues in a working environment. If you have some conflicts, even 2 teachers in the staff room have it. If you don't come out of those conflicts, you are not the one who is losing on it. It's the children who are losing on it. Because of your conflicts, the children will suffer. Because you both will not come on to one thinking. So who is the sufferer? The child is the sufferer over there. So we need to resolve the conflicts. We need to develop an action plan. Sit, talk it out. Seek an agreement. Identify the solution. Okay, this was one small thing that we had a conflict on. Okay, let's work it out in a very mutual way, Let's find a mutual solution to it. Develop a plan on it. Talk to each other and resolve those things. Because until unless you don't resolve the conflicts, you cannot patch up again. So to patch up, you need to resolve it. Then comes leadership. Now, leadership is something that is within us. We all know that we all can be good leaders. The thing is, we need to recognize that skill in us. People with strong leadership qualities only can inspire others. Leaders need to assess, motivate, encourage, organize, and discipline their subordinates and juniors. Good leaders are looked upon to build strong teams. Moreover, they carry forward the legacy of an organization. When you are a good leader, people look at you with a lot of respect, lots of expectations, because they know that if you are falling down somewhere, you have a leader who is going to pull you back from there. He's going to lead from front and tell you how you have to do the things. A leader should be someone who should not fall down at the time of crisis. He should be someone who should motivate others also, who should encourage them. He should be someone who can organize things, but at the same time, he should know how to maintain a discipline among his subordinates and juniors. He should know how to praise them at times. He should build strong teams. He should be socially and emotionally connected, a leader. And that is how leadership qualities come. And believe me, if you have leadership qualities, you become an icon, a face for the organization. It becomes a legacy of your organization. We come to work ethics.
Work ethics is being punctual, being responsible, showing time management. Now, all these are key components of work ethics. Responsible people who fully commit to their work are considered productive and successful overall. We all know this. Yes? Responsible people today, if I'm responsible enough, I know, I realize my responsibility towards a particular work, I will finish it in time. I know this is my commitment. I have to meet a deadline. I will do it, whatever it is. Because that is how it has to be. That is work ethics for me. People work efficiently for both their personal as well as their organizational goals. Now, people who really believe in work ethics, be it their personal goal or be it their professional goal, they take it at the same level. They are committed to it thoroughly. It is no compromise in it. Such people stay punctual, whether arriving to office or meeting their deadlines. They schedule things in a proper manner and well in advance. And you will always find, people with work ethics, they always have this, they have a priority checklist made. They have a to-do list done. They plan everything, weekly planner is with them. They go on ticking what is to be done and what has to be met the deadline with, and how it has to be planned in a way so that, all the things are done in a proper way, in a proper procedure. They're very systematically done. So that is kind of work ethics that we need to follow. Then comes team spirit. Now, having team spirit is something very essential for all of us. Why? Because teamwork does not mean only associating with your own department or sector. It means to collaborate with everyone around. Learn to appreciate efforts and ideas of others in the team. One's weakness needs to be overcome with others' strengths. This is very important. Always have this in mind. There must be weaknesses in us also, But if somebody in the team is helping us out, we should keep our ego aside and take that helping hand and grow with it. Because today, if he's helped you to come out of your weakness, there'll be something that he's weak at and your strength can help him out. So this is how a team is built, helping each other, overshadowing the weaknesses of each other. That is how a team works. Involve yourselves in productive collaborations to accomplish goals. There is no space for ego and personal conflicts. See, when you're working in a team, you cannot say, I am only the best. I can do this. I will do this. No, we will do this. When I becomes we, only then can team spirit come into any team. Then only we can build a strong team. Now, when we are building up a team also, we need to see, I've seen many places where, they are divided in their own departments, I've even been to a few schools where, the computer teachers are among themselves, the science teachers are among themselves. They have groups. No, come out of those shells. Be together. All of you share the staff room. Talk to each other. Even in offices, I belong to the accounts department. I belong to the marketing department. No, you belong to a particular organization. You don't belong to a department. So we need to understand that. We all together are a team. We cannot say this department, this group, and that. When it comes to a particular organization or when it comes to a school, everybody together makes a team, be it from any department or be it from any faculty. So we need to have all this in mind. Problem solving. Holding to your nerves and applying your skills and knowledge to the right potential demonstrates how well you can handle the given situations. Apart from analytical, creative, and critical thinking skills, one needs to be calm and composed and to handle any situation and reach out to a solution. Glitches, bumps, stumbling blocks are all a part of the job as well as an opportunity. Yes, we need to, answer all the questions. Why, when, who, where, why, what. We need to be able to answer those, and all that can be done when we sit down with a composed mind, with a cool head, and think about what the problem is and how we need to tackle it. Instead of getting jittery and getting nervous and not able to think, because when you're nervous, you will not get good solutions. You will not have a creative mind to think about. You cannot critically think on anything. You will not get a solution for what you're doing, what you're facing. So it is always better, if you have to have a problem, you need to calm down, think about it,
and you need to find a solution to it, and then only it will be problem solving. So you need to know how to tackle the situation over there. You should know how you have to move forward. What are the steps that you need to take even at that particular point where things are very, very hard for you to cope up with. So you should be in a frame of mind to take up. See, there's a saying, the roses do not come without thorns. Problem solving is something like that. There is no opportunity or no big work that comes without any problems. We find problems in everything. Yes, so we have to cope up with all that. We need to understand that we need to find a solution to it. Instead of losing hopes and giving up over there, we need to sit down and think about it. Now coming to decisiveness. Decisiveness depicts ability to make quick and effective decisions. It includes analyzing options, assessing relevant options, anticipation of consequences, whether good or bad. Now, decisiveness is decision making. We need to be in a right frame of mind to take decisions. When we are able to take decisions on a particular moment, that works good. When you are confused, should I take yes, no, ha, na, karu, nahi karu? You're losing on time and quality things on it, because you're just thinking about it and getting even more confused. If you are good at decision making, you will think about it, you will think about the pros and cons, the good and the bad, and you will immediately take a decision on it. You will be able to analyze the consequences, whether they will be good or bad for you. A person with decisive state can take considered action quickly, even when under pressure. Yes. See, a person who gets confused with things, will always lose his head when there is pressure. He will never be able to take a decision at that time. It will not work for him, because in a very normal state only he is so confused. So when a situation comes with this pressure, how can he take a decision? So decision making plays a very important role. We need to be very quick at times with that decision. We need to analyze and anticipate what is good and what is bad, what are the pros and the cons, what is positive and negative, and quickly take decisions on it. Because opportunities will not wait for us, if we take that much of time. Next, we come to flexibility and adaptability. This skill defines how well one can cope up with changes and adapt to the environment. An ability and willingness to embrace new tasks and new challenges calmly and without any crib or fuss. A person with multitasking is more acceptable today to remain in the competition. Someone with this skill is mentally prepared to be on his toes, because you don't know how and when circumstances will change. Well, flexibility and adaptability, I think the best example we can all give is being into this education fraternity. We've all faced a lot of problems in the last 2 years of pandemic. We have changed the complete scenario of the way we've been teaching children. From a traditional way of teaching from the chalkboard and whiteboard marker, we came to the online mode of teaching, virtual platform of teaching, having these conferences on virtual modes. So we have really changed, the way things have been. We have been flexible enough. We've been adaptable enough to take it. We followed the new norms. This has become a new norm. Just imagine if we had to crib over it or make a fuss over it. We all would not be able to, save those 2 years what the children would be losing on. But with the intention that the children should not lose 2 years of their education and should not fall back 2 years, we adapted to the new methods, we adapted to the new environment, we made ourselves flexible enough, learned those things and did it. And this is how we have to always do. Because when we are flexible enough and adaptable enough, it opens more opportunities for us. It gives us a wide platform to work on and do research on. We have plenty of options open for us accordingly. So it gives us more options to work and make us multitasking. So we should always be open for that. Well, with this, I come to the end of the presentation, and I would be stopping to share the screen now. Yes. Thank you all for being so patient enough to listening to me. Excuse me, ma'am. Yes. Sonia, ma'am, it was a really very, very good
And the first time I have just joined this association, so it was very, very good. I really like this association, and I'm trying my best to join other members also. So, ma'am, I was having one query. Can you Yes. resolve that query? Yeah, please, ma'am. I will try my best to do it, ma'am. Because you are the first person to guide me up. Well, I'm a physio, but really some things are there that I cannot manage it by my own. Okay. So I'm working in an institution, and that is a school only. I'm working in that, and I have number of teachers under me. Right, I'm a Okay. coordinator head, but sometimes what happened, we have a lot of pressure from our heads, right? For example, we have to make the papers, or the ultimate time is given to us. We have to do this. We have to do this. So we have to talk to the teachers also, right? Yes. We too have a pressure. They also get the pressure. The same thing is, ma'am, if we are very polite to them, they are not doing the work. But if we are make little bit rude to them, then also the problem is that you are rude. So in that situation, what should we do? Being a coordinator head, what should we do? If it can involve principal also, because principal tell to the coordinator, we are saying okay, yes, okay, yes. But when it comes to the department of the teachers, they always stay at this moment. In 2 years they are so much in that mode that they are not, I think so, they are not ready, or they have that pressure. I can understand it. But if we are very, very polite to them, they are not doing it. If we are very rude to them, then also they are not doing it. Then what should we do? Ma'am, I would like to say here that you need to build a rapport with your team. You have teachers Okay, under you, right? We need right. to build a team first. We need to make them understand that we all are working together. If they are Okay. being pressurized, and so are you being pressurized by your seniors. Hmm. कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को उनके साथ एक छोटा सा चाय पे चर्चा करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि That I'm doing it. नाश्ता चाय उनके लिए मंगवा लो, उनके साथ एक बहुत ही कैजुअल सा मीट ले लो, उनको बताओ कि ये सर्कमस्टेंसेस है डियर, हम सबको इन चीजों को कोप अप करना है, सिर्फ आपको नहीं, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, तो आप लोग खत्म करोगे तो मैं ऊपर भी खत्म करके टाइम पे दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी डेडलाइन मीट करना है. पहले छोटा सा रेपो बनाइए. मैम, एक्चुअली क्या हो गया है, 2 साल से चीजें बहुत डिस्टर्ब रही है सबके साथ, be it the top level management, be it us, or be it subordinates who are under us, or be it the students from whom we have to get the work done. Things are very different because we've been working from a very different scenario, work from home. And at that time it was, अच्छा ठीक है, फ्री हो गए, रात को मेल्स भेज दिए, काम हो गया, सारा सेटअप हो गया. हम लोगों को अब क्या है, फिजिकल मूड में वापस आना है. इट विल टेक सम टाइम फॉर ऑल ऑफ देम टू गेट बैक टू दैट मोड ऑफ वर्किंग अगेन, यू नो, बिकॉज उन सबके घरों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी मैम. सबने, किसी ने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखी होंगी, किसी ने कोई मेडिकल ट्रेजेडीज देखी होगी, किसी के घर में डेथ हुआ होगा, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम रही होगी. तो सबका माइंड ऑफ फ्रेम भी वैसा नहीं है. सबके माइंड के साथ क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंट खेल रहा है. तो हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. आपको उनके साथ भी वो रेपो बिल्ड करना पड़ेगा, और यही चीज अपने मैनेजमेंट को भी बतानी पड़ेगी कि देखो, सिनेरियो सबके साथ ऐसा है, गिव अस सब टाइम टू गेट बैक इनटू दैट ट्रेंड ऑफ वर्किंग अगेन. और कोशिश कीजिए कि उनको ना एक ऐसे लेवल पर लेकर आइए रेपो के लिए कि जहां अगर आप उनके साथ थोड़ा फर्म होकर भी बात करते हो ना, तो उनको बुरा नहीं लगेगा मैम. वो लोग हंसते हंसते काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है, अरे मैम ने कहा है, मैम के ऊपर प्रेशर होगा यार, खत्म करके दे दो, मैम वापस नॉर्मल हो जाएगी. ये एक ट्रेंड होता है. तो वो चीज आपको उनके साथ बैठकर डेवलप करनी पड़ेगी मैम. Actually, ma'am, what happened, I feel too that उनके पर प्रेशर वो पड़ा है. What I used to do, I do that work. कि यार उन पे प्रेशर नहीं पड़े. And what happened, it is getting pressure on me. तो वो जो सिनेरियो हो जाता है, वो डिस्टर्ब सिचुएशन हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई कैन अंडरस्टैंड. तो आपको अपने And सीनियर से भी the बात करना online पड़ेगा. mode and that mode now, activity based learning, everything is total activity based. Every day we have to rate the activity. So teachers के लिए it is a very difficult task for them also. But I Yes. tell them to prepare it in 1 week advance so that you doesn't get so worried about. वो सिर्फ ये कहते हैं, मैम हमारे यहाँ तो नहीं होता था ऐसा, पहले तो नहीं होता था ऐसा. तो मैं जवाब क्या देती हूँ, आप इसका कुछ नहीं कर सकते.
Now we have to do like this. बोलो we I'm have there to with you. keep it planned, you know. जब भी planned होगा ना मैम, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी. Actually प्री प्लान उसी में वर्क एथिक्स काम आता है कि हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, टू डू लिस्ट बनाए. और मैम अभी तो जैसे एनईपी लागू हो रहा है, एनईपी का तो सैंक्शन हो ही गया है. अब एनईपी के साथ तो टीचर्स का काम और बढ़ेगा, क्योंकि और कई सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी देखनी है, लर्निंग स्टाइल्स भी देखनी है, रूबिक्स भी देखने हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग भी करनी है, इवैल्यूएशन सब कुछ करनी है. करना है मैम. तो उसमें कितना काम बढ़ जाएगा. तो उनको अगर वो लोड लेना है तो उनको अभी से अपने आप को मेंटली अभी से उनकी you have to plan it. उनको सिंक करना पड़ेगा उसके अंदर अभी से. Because their health also get deteriorated now. Their health also get deteriorated. What I feel in the humanity also, the humanity ground, they feel very exhausted, doesn't want it to work. And whether they are trying it to work, they are doing the wrong. Because I feel stress ज़्यादा पड़ रहा है. उस कंडीशन में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैम अभी फिलहाल 6 महीना और स्ट्रेस लेवल दिखेगा, क्योंकि चीजें से वो एक अलग फेज पे आ रही है. पहले जो मोड था ऑन एंड ऑफ हो रहा था, अब वापस वो एक प्रॉपर सिनेरियो में आ जाएगा जहाँ पर हम लोग काम करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको भी सेट होने में कुछ समय लगता है. मैम जैसे ये एनएपी पॉलिसी है, जैसे आपने ये स्किल्स इंप्रूव कराए हैं, तो एनएपी पॉलिसी के बारे में मैम कोई एक सेशन करा दीजिएगा, जिससे हमें जो हम रीडिंग पैटर्न में देख रहे हैं हम आपसे सुन लें और एटलीस्ट ज्यादा ग्रैस्प कर लें. तो मैम एक नया ये भी करवाइएगा. मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, मेरे पास मटेरियल है, मेरा पीपीटी रेडी नहीं है. आई जस्ट मेक इट एंड आई put it forward. Oh, thank you so much. This association is wonderful. I really like it. प्रीति मैम, Good evening, ma'am. प्रीति मैम पहले भी एनईपी पे हो गया है, और ये इस एसोसिएशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी ना. अभी आप थैंक यू गरिमा मैम. गरिमा मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल फैमिली. प्रीति हाडा मैम, मैं इस जो आपने क्वेश्चन पुट किया था, मैं जी सर, लाइक इसका एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आंसर देना चाहूँ तो ये रहेगा कि एक छोटी सी स्टोरी में सुना रहा हूँ. एक बार एक घर के जो सबसे हेड मेंबर थे, सीनियर मेंबर थे. Excuse me, sir. Please narrate the story in English, sir. Please. मैम इंग्लिश में मैम वो मजा नहीं आएगा इस स्टोरी का ना. Yeah, sir, but we wish to have in English. मैं ट्राई करूंगा कुछ वर्ड्स का. Thank you. फैमिली हेड थे, वो आए किसी जो है आचार्य जी, मेरे घर के मेंबर मुझे सुबह उठ के नमस्ते नहीं करते. अच्छा, क्या सॉल्यूशन आप करेंगे मैम कि मेरे घर के मेंबर्स जिनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है वो मुझे सुबह उठ के नमस्ते नहीं करते. तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आप उनको नमस्ते करना शुरू कर दीजिए. उन्होंने कहा यार मैं क्यों करूं, मैं तो सबसे सीनियर हूँ. उन लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मुझे उनकी करनी चाहिए. तो आचार्य जी ने कहा कि ऐसा करें, आप कुछ करें, उसके बाद अगर कुछ माहौल बदलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखेंगे क्या करना है. अब उन्होंने कहा ठीक है जी, मन मार के जो है जैसा भी करके उन्होंने जो है सुबह उठ के, अब बेटा उठा, बेटे को उन्होंने नमस्ते करनी शुरू कर दी, बहू उठी, बहू को नमस्ते करनी शुरू कर दी, पोता उठा, पोते को नमस्ते करनी शुरू कर दी. अब स्टार्टिंग में तो उनको अटपटा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ. अब थोड़े दिनों के बाद बेटे को भी लगने लगा यार पिताजी उठ के मुझे नमस्ते करते हैं और कितना मुझे बुरा लग रहा है. बहू को भी लगने लगा. अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होने लगा, और जो है क्या हुआ, जैसे ही सुबह पिताजी उठ के आते, पिताजी नमस्ते, उधर से बहू आ रही है पिताजी नमस्ते, उधर से पोता आ रहा है पिताजी नमस्ते. अब वो आचार्य जी के पास गए कि आचार्य जी ये तो वाकई में कमाल हो गया कि आपने जो आइडिया दिया था मुझे वो कहीं ना कहीं काम कर गया है, लेकिन मुझे ये चीज बताएं अगर ये आइडिया काम नहीं करता तो क्या होता. तो आचार्य जी मेरे जैसे ना, जो कहते हैं ना हरियाणा के जो वो होते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं ज्यादा चीज, वो वैसे थे. उन्होंने कहा देखो जी एक चीज होनी थी, या तो वो चेंज हो जाते, अगर नहीं होते तो आपको आदत पड़ जाती. अच्छा. तो दो ही चीजें हैं मैम, या तो हम धीरे धीरे उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे किसी तरीके से, कोई ना कोई आइडिया के साथ, या फिर हमें उनको बोलना छोड़ देना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा. इग्नोर करने से क्या होगा, जब हम
आपको पता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज है, किसी को कुछ ना करो, इग्नोर कर दो, अगला अंदर ही अंदर है ना, सब कुछ भस्म हो जाता है उसका। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन सर, मुझे ना मेरे अपने फादर की एक बात याद आ गई छोटी सी। उन्होंने कहा अगर आपको किसी को पनिशमेंट देनी है ना, उसको चुपचाप एक कोने में खाली बिठा दो, कुछ मत करने को कहो उसको। और वाकई में ये वर्क करता है। वो सोचता है बंदा कि क्यों मैं आउट ऑफ सीन हूँ, तो मेरे को आपकी बात से उनकी बात याद आ गई। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। कोई बात नहीं मैम, आप में से मेरे बात के साथ जितने एग्री हैं वो प्लीज अपना चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो। I to agree. बिल्कुल सर, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, एक्चुअली ऐसे सर कई लोगों की आदत होती है कि आपने एक बार ना एग्री ना तो कहेंगे दो बार क्यों लगे। रोल मॉडल बनना पड़ता है उसके लिए एक्चुअली, ताकि क्या दूसरे उस चीज को देखकर फॉलो करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगला खुद से करेगा तो वो नहीं पॉसिबल होता। अब मैं सोनिया मैम इसमें थोड़ा सा अगर कहूँ, लाइक मेरी ही टीम है स्कूल के अंदर, लाइक आई एम डायरेक्टर ऑफ ए स्कूल। तो मेरी टीम के अंदर हमारे तमन्ना मैम है, प्रिंसिपल मैम है, मीनाक्षी मैम है, वाइस प्रिंसिपल मैम है, सुमन सिंह मैम है, वो जो है टीचर है। एक ऐसा माहौल हमारा बना हुआ है सभी का कि एक दूसरे को किसी भी काम के लिए हम लोग मना नहीं करते। और That is really true. इतनी बॉन्डिंग हमारे बीच में, सभी के बीच में थी कि इस लॉकडाउन से लेके किसी भी टाइप की किसी भी सिचुएशन का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम वही मस्त मौले रहे, उसी तरीके से काम किया, हर चीज को एंजॉय किया। और जब ये सिनेरियो चेंज हुआ, वापस फिजिकली उसमें मोड में आए, फिर से हम उसी टाइप से लगे हुए। कोई 1% भी अगर मैं कहूँ चेंजेस नहीं है। ये मतलब वो चीज है कि हमने उस चीज को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बट बहुत सारे एडुकेटर्स ने उस चीज को हावी होने दिया, लाइक स्ट्रेस में चले गए, कैसे क्या होगा, कईयों ने जो है कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। So I suffered from corona 2 times. I just take it in a strength, यार ठीक है, यार काम करती रहूंगी तो ज्यादा जल्दी ठीक रहूंगी, और अगर नहीं करूंगी तो ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। I believe in working hard. प्रीति मैम जस्ट अ सेकंड, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, 1 सेकंड लेना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर मोनिका तंवर भी है। डॉक्टर मोनिका तंवर मैम, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया। एंड सेकंड टाइम है कि हमारे पास मैम जो आए हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट है मैम, डॉक्टर मोनिका तंवर मैम। गरिमा मैम, क्या मैम यहाँ है? Yes sir, she is here. Okay. I think busy है थोड़ा बहुत मैम। Specialized in sir which? गरिमा मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मैम के बारे में? Ma'am, she is a senior dietologist in Anand Hospital and she has that Star Hospital है जो मेरठ में ही, उसमें ये पॉजिटिव है मैम। और मैम के हस्बैंड आए हैं, मुझे भी इनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मेरठ के ही, अभी याद नहीं आ रहा है। आप मैम बताएंगे प्लीज। हेलो, थैंक यू एवरीबॉडी सर, गरिमा मैम। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देती हूँ। आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह तोमर। आई एम मैरिड टू अ सर्जन डॉक्टर मेधावी तोमर। ये यहाँ पायनियर है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं हम लोग। वी हैव वेरी स्मॉल सेटअप विद द नेम ऑफ स्टार लैप्रोस्कोपिक सेंटर, स्टार हॉस्पिटल। इट्स अ स्मॉल 25 बेडेड हॉस्पिटल। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, MBBS MD किया है मैंने। एंड आई वाज फर्स्ट टू गेट कोल्पोस्कोपी, दूरबीन से जो चेक करते हैं सर्वाइकल कैंसर का, 12 years बैक मेरठ में। और गरिमा मैडम के थ्रू मैं इस संस्था से ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी सोनिया मैम का, इट वाज वेरी गुड। लास्ट भी मैंने इनका अटेंड किया था, दिस इज द थर्ड वन। अजय सर का अटेंड किया, इट वाज ऑल वेरी नाइस। बहुत ही एडिक्टिंग सा ग्रुप है सर, वेरी पॉजिटिव। यस, दैट इज रियली समहाउ एंड आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारा और कि आप जैसे ऐसे विद्वान लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा इस एसोसिएशन का क्या सौभाग्य होगा कि आप लोगों के सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव काम कोई करे तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना भी चाहिए और उनका वंदन भी करना चाहिए। सर नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरिमा मैम से मैं सुनती रहती हूँ आपका। मैं आपके पास आशीर्वाद लेने खुद पहुंच जाऊंगा। सर आप हरियाणा बेस्ड है? यस मैम, आई एम फ्रॉम रोहतक।
रोहतक। अच्छा, मेरी नानी was from हरियाणा, वो Oh. थी सोनीपत साइड से, दहियास है वो लोग, अब तो नहीं है, बहुत कम लोग रह गए, बट वी हैव अ लिंक, वहां से भी आपकी तरफ से भी जुड़े हैं वैसे सब लोग। आई थिंक जब आपने नाम लिया है तो एकदम से उनकी प्रेजेंस होगी है यहाँ पर उनकी। हाँ जी। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज कीप इट अप, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। हमेशा हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और कभी भी कोई हो तो यू कैन ऑलवेज ट्रबल मी, इट विल बी अ ब्लेसिंग, है ना। हम उसे अपनी कहते हैं किस्मत समझ के करेंगे। वंस अगेन सोनिया मैम को भी आज का बहुत अच्छा, अगेन इट वाज अ वेरी नाइस। Thank you, ma'am. Thank you so much. समथिंग वी रियली नीड टू बिल्ड अप। लैकिंग है ये, जैसे मैम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रही थी, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, सीनियर्स एंड इनके, दिस इज समथिंग एवरीबॉडी नीड्स टू इनकलकेट, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी आप वो जो ना, जैसे सर आप कर रहे हैं अपना लॉकडाउन से कर रहे हैं बड़े अच्छे से, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी है कुछ, आपका कैलिबर है, सॉफ्ट स्किल है, लोगों को नेटवर्किंग है, कनेक्ट करने का टैलेंट है, विच इज द नीड ऑफ द थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। अभी एक मैसेज मैंने चैट बॉक्स में, सुशांता राय चौधरी सर कह रहे हैं, आई वांट टू से सप्लीमेंट्री ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। यस सुशांता सर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would like to thank Sonia, ma'am. Very nice presentation. Thank you, sir. The soft skill is very demanding skill in this present time, but this skill is not a fixed point and position. Day to day change the world, and soft skill are changing for the various situation and organizational structure, and very environmental situation is very changing firstly, so soft skill is changing. The ma'am present the various soft skill, but I added some soft skill, active learning, emotional intelligence, time management, use of technology. That's are very important as a soft skill. This topic, this item got a total worldwide demand the skill, but the some madam are create say the problem, the organization problem and stress level, anxiety level. I work in my college. I am from Bangladesh. I am a government college teacher and associate professor. I work as a project enhancing awareness, health and well-being among students. It is the Nottingham University of Malaysian and program, Future Leader and Project Management program. This project is implement in my college, higher secondary and undergraduate and postgraduate level. 870 students engaged in this pilot project. But I observed that majority portion student are feel in the trace level, the third, fourth and fifth level, for being their communication skill and other skill, their problem solving skill is very low. There is no connection of the soft skill and their mental ability by mental stress level. But I think that maximum student their anxiety level is increased. Not only student and professional man, woman and teacher, like doctor, like engineer and so others, their stress level is high because their soft skill and managing capacity is not increasing. Problem solving, analytical ability, problem solving skill is very important, and team building, leadership, flexibility and adaptability and emotional intelligence is very important. But in this present situation, we are not difference between the management and leadership.
management and leadership is the same type but difference two things. Our we are alwaysly normally say this is a Mr. Kamal, Mr. Rajesh is the leader, but leadership quality is not is. Steve Jobs is a leader. Mahatma Gandhi, Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman is a leader, but leader is a special and visionary work and visionary things. So leader or manager as not same things. So leadership quality is developed if a employee, if a student, then they are emotional intelligence is needed for leadership capacity build up. And other things, soft skill is very important. Madam's presentation is very nice and very detailed, but this skill is not achieved in a time, in a short time. It is the lifelong learning, active learning, and this is a practicing situation. This is the exercise time to time, and they want to, we are want to able this skill, then we are got this skill achieve, and our competency level is high, then we are manage the maximum situation. Any other one technique are not used in same situation, context, organization culture, man to man is various technique are used. So it is depend on the managers and subordinate and colleagues who are manage this style. So it is carefully use the situation, observe and use, implement the technique. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, Shanta sir. Or Likewise, Sonia ma'am is very nice. Her presentation is so nice. But when organizing a group or leading a group, whenever we are following, either we must be friendly with those people. Whenever it is same, then they will complete us. When the management pressures arise us, they will support it at that time also. So from the beginning, we should maintain a friendship relation so that they should not take over advantage and also not wish to left from the job, right? Yes, That will be very we nice. should know our limits also. We should know how much we have to give in and how much we Yeah. need to pull out. You know, and we need to make the repo in such a way only that it is healthy and nice and it will stay for a long-term association. Yes, but without taking any much more advantages from us, we have to share the same relationship from the start to the end. Then whatever the management pressurize us will be shared as we have the focus. It will be very good, I think so. Very true. Thank you, ma'am. Thank you. Good evening and welcome, Dr. PRITHVI ma'am. Thanks, Sonia ma'am. Nice to hear you again. Thank you, ma'am. Nicely, you had to mention the soft skill, what are the requirements. So thanks again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Anybody, any educator wants to ask any question, then you can unmute yourself and ask your questions. Good evening, sir. Good evening, Lakshmikant sir. कैसे हैं? नमस्कार सर. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर. Really wonderful session, ma'am. No question at all. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, wonderfully explained. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. मिस्टर लक्ष्मीकांत सर हमारे यहाँ उना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं
और ये इससे पहले हमारी एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश स्टेट के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनकी वर्क, इनके डेडिकेशन, इनकी काबिलियत के उस पे बेस पे हम लोगों ने इनको हमारी नेशनल टीम में ऐड किया है और ये हमारे नेशनल टीम के अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो एक Sir, बार he's in Pune. Sir, he's in Pune. नो मैम, ऊना, UNA ऊना, हिमाचल प्रदेश। Okay, okay. Una सर को भी हमें कंप्लेंट करना इनवाइट चाहिए। कीजिए, हमें इनवाइट कीजिए काउंसलिंग सेशंस के लिए, तो इस दौरान हम हिमाचल भी घूम कर जाएंगे। अरे मैम मैं इसमें ये कहूंगा कि उस चीज के लिए जो है ना सेशंस की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट आए, मोस्ट वेलकम, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ा इवेंट और ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं हम हिमाचल में। हमने 13 नवंबर 2021 को 2021 में जो है इवेंट किया था हिमाचल प्रदेश में, जिसमें मोर देन जो है 18 स्टेट्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने ज्वाइन किया था वो। और अभी कोरोना टाइम में हमें पता है कि बहुत सारी और भी ऐसी सिचुएशंस हैं, अभी एग्जाम्स टाइम होगा और सारी चीजें होंगी, लेकिन इन फ्यूचर हम फिर से प्लान कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से एक इवेंट करें, जिसमें आप सब लोगों को यहाँ का धर्मशाला, मैक्लोडगंज और ऊपर का जो एरिया है वो हम लोग विजिट करवाएं। और पूरी पाई फैमिली जो हमारे साथ खड़ी होगी, तो मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे मेरे से ज्यादा पावरफुल ओबामा भी इस टाइम पे क्या नाम उनका वो। सर यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरठ से तो पूरी टेम्पो ट्रेवलर भर के आने वाली है। अरे क्या बात है। Okay, गरिमा मैम, one seat booked. सर जया दुबे ने भी ज्वाइन कर लिए हैं, जया जो आज हमारी न्यू मेंबर आई है। यस मैम, यस। तो वेलकम जया मैम। हेलो जया मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। I'm good, sir. Good evening. Very good evening to everyone present here. And मैम हम तो चाहेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन करके एक बार सभी को दर्शन जरूर दे दें, ताकि हम लोग इन फ्यूचर जब भी आपसे मिले तो बिना वो किए ही आपको पहचान लें। Definitely, sir. I would love to do that, but मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क डाउन है यहाँ पर, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा है। मैं जब से ज्वाइन किया मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैमरा ऑन कर लूँ, बट नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि नेटवर्क कनेक्शन मेरा स्ट्रांग हो, ताकि मैं सबको फेस टू फेस एक बार मिल पाऊँ। जी मैम, ये मुझे ये लग रहा है गरिमा मैम, हमें ना तो एक नेटवर्क का भी रखना पड़ेगा। जिनके यहाँ नेटवर्क कम होगा ना, उनको थोड़ा सा उधार दे दे और उन लोगों के दर्शन कर पाए हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेलकम जया मैम, और बड़ी खुशी है कि आप पाई एसोसिएशन, पाई फैमिली के साथ जुड़े हुए, और मैं इसको एसोसिएशन कम और फैमिली ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगता ही नहीं है हम लोग जो है जस्ट एक एडुकेटर्स के तौर पे ज्वाइन करते हैं। हम यहाँ पर हर तरीके की, हर एडुकेटर की जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, उन सबको जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लाइफ की नहीं। हम एक्चुअली हर एक वेबिनार के बाद जो हमारा टॉक शो रहता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमारे गरिमा मैम, शादा मैम, डॉक्टर प्रीति मैम, लक्ष्मीकांत सर और रिस्पेक्टेड जो हमारे ऑफिशियल मेंबर्स हैं, अभी तो हमारे सोनिया मैम भी जो है हमारे गुजरात स्टेट के जो मेंटोर हैं पाई एसोसिएशन। अगर आप किसी भी टाइम की नीड है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। Sir, can I interrupt you? Yes. Sir, can I interrupt you? Actually, I didn't introduce myself properly. Sir, I myself, Dr.